and it is fantastic to have you all here. Thank you for joining in, Nalini, Narendra Mulani. I'm sure you are doing fantastic with time cycle. Narendra Menti is using time cycle very, very aggressively, and I'm sure he's doing well. Vidyut Chandra has also mentioned how he made money trading the markets, and Rajan Sharma, welcome on board. Shilpi Jain, great to get you on board here. I think you're joining after some time. Awesome call on Nifty. It has done fantastic. Debraj Baidia, Raj, Kunal Sonia, warm welcome to all of you. Shubham Agrawal, Mahabali, Ashish Kyal. No, Mahabali, I'm just a time trader, guys, and I'm just sharing across how it works. FLD is awesome. Hardik Mehta, great to see you also here after some time. एंड निफ्टी का टारगेट और सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों. पहले तो ये जानते हैं कि कैसे कर रहे हो आप लोग. ये हफ्ता ट्रेड करने में मजा आया या नहीं आया? बिकॉज ट्रेड करने में मजा आना ही चाहिए. If you are following my tweets, my Twitter handle will be shared across by my colleague very quickly, because if you are following my tweets, you might be enjoying every single bit of market movement that we are seeing. महा मजा, बहुत मजा आया. चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है. ये रही जूम की लिंक. पीपल हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, डू जॉइन मी ऑन द जूम. डू लाइक, शेयर एंड शेयर इट अक्रॉस एंड पुट योर कमेंट्स. दोस्तों, यूट्यूब वाले आप कमेंट नहीं डालते हो तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो कमेंट डालना ना भूले, चैट पे डालना ना भूले. क्या देखना है आपको ये फ्राइडे एट 4 से? फ्राइडे एट 4 इज मेंट फॉर मोर एडवांस्ड डिस्कशन विथ यू ऑल, जहां पर हम फोरकास्ट करते हैं मार्केट को, प्रोजेक्ट करते हैं मार्केट को. इट्स मोर टू डू विथ फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्शन. और जो सैटरडे को होता है, दैट इज मोर टू डू, वहां भी फोरकास्ट तो कर ही रहे. साथ ही में सैटरडे को जो होता है वहां पर हम ये देखते हैं कि क्या मार्केट को बेसिक लेवल से अंडरस्टैंड करके देखा जा सकता है या नहीं. ये दोनों अलग चीजें हैं जो हम कर रहे हैं. तो दोस्तों, कल भी सैटरडे है. क्या आप सैटरडे को जुड़ना चाहते, फिर से वो टाइम निकालना चाहते हैं जो लास्ट सैटरडे हमने निकाली थी? इट वॉज ऑन 28th of November, 2 p.m. That was the time that we have derived last Saturday together with many of you who were there for that webinar. And wow, what a day it was. It was like the final match of India-Australia, where India won, by the way. So 19,810 पे था निफ्टी. और 2 बजे जैसे ही मार्केट में 2 का पहल हुआ, 2 बजे की पहल हुई, exactly from that time the rally started. Nifty shot up by 100 points that day, gap up another day, and we are right now standing at the lifetime high levels. That's the precision of how it works. The target given was also 20,520. One is the next target, the third target, that's the gain level of target. आज का जो टारगेट था 20, कल का जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ, 20,150 था. एंड वो तो क्या चला. अगर आपने देखा होता, buy on dips, are there people who were there yesterday with me on Twitter when I mentioned that buy on dips to the level of 20,020, aiming for 20,150? I am asking you, how many of you were there in that specific tweet? और किस किस लोगों ने टाइम ट्रेडिंग की मेरे साथ में कल के दिन में? I can see Vaibhavi, I can see Tarachand, I can see Nilesh Pawar. Wow, you are here. Anil Gemawat, Vidyut, Kunal, Raj, Adesh. क्या बात है यार, आप लोग डरे नहीं. जब वो कैंडल बनी ना, रेड कैंडल, वो बहुत डेंजरस थी कि नहीं? रेड कैंडल बनी, अनिल, कौशल, एंड वो रेड कैंडल बनी, लेकिन रुकी का 20,015 पे. मैंने तभी भी कहा था एक वेबिनार में कि झुकेगा नहीं. हमारा मेंटरशिप सेशन भी स्टार्ट हो गया दोस्तों. जैसे मैंने कहा कि रुकेगा लेकिन झुकेगा नहीं, वही चीज निफ्टी के साथ चल रही है कि यार झुकेगा नहीं, ये चलते जा रहा है. यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मार्केट में बाय करना है, एंड इट हैज टू बी विथ लॉन्ग्स. तो 20,020 का आंकड़ा ट्विटर पे लिखा था और टारगेट लिखा था 20,150. कल के दिन में दोनों के दोनों लेवल्स एग्जैक्ट आए, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस, लेकिन सुपर्ब चला. आज का लेवल लिखा था 20,251, और निफ्टी अगर देखेंगे तो वहीं पे आसपास 20,251 से ऊपर गया, फिर नीचे आया, वो मैग्नेट की तरफ पकड़ लिया 20,251 को. एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
things that is there is, despite of the exit poll, despite of every event, market is doing what it is supposed to do. You don't have to worry about it. It will do what it is supposed to do. And that's the beauty of market, because Nifty hit the lifetime high levels above that 20,222, and it went like rocket. It is super. The best way to trade this market is to keep riding every single day, looking at one simple trailing stop loss method. जब तक निफ्टी का क्लोज प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं होता है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स एंड बाय ऑन डिप्स. तो मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं बाय द डिप्स, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे थे. पहली बार जब मैंने कहा कि बाय द डिप्स, जब निफ्टी था 19,200 के आसपास, when it formed a low at 18,838, gain square of 9. You know, ये सब लेवल्स मुझे बाय हार्ट कैसे, क्योंकि ये सब गेन लेवल्स है. तो वहां पर मैंने कहा था ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट फिलहाल है, यहां से ऊपर जाएंगे हम करीबन 19,500 के आसपास तक जाएंगे मुहूर्त ट्रेडिंग पे. मुहूर्त ट्रेडिंग पे 19,500 के आसपास निफ्टी गया, उसके लेवल के आसपास छुआ, उसके नेक्स्ट डे नीचे खुला, लेकिन वहां से फिर टाइम साइकिल टर्न होके मार्केट फिर से रैली. एंड इफ यू आर फॉलोइंग द लूनार साइकिल दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, past 3 instances, including this one, Nifty rallied brilliantly after the lunar cycle. All of these things I'll do it tomorrow webinar. ये सारी चीजें करेंगे. And बहुत ही सिंपल वे है मार्केट को ट्रेड करने का. If you know wave theory, which is Elliott wave, and if you know options and time cycle, ये 3 चीजें है, ये 3 सूत्र है. तो फिलहाल तो हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम भी इसलिए चेंज कर दिया, ब्रह्मास्त्र, which is for mentorship. The option trading, please let me know if it is correct or not. Option trading using technical analysis जो प्रोग्राम है, उसे हम कह रहे ऑप्शंस मंत्र. और इस टाइम हम 5 मंत्र आपको देने वाले ऑप्शंस ट्रेडिंग में, which is going to be phenomenal, which I am going to do. I'll share that across later on, which will involve KST, which will involve looking at moving average crossover system, which will involve looking at Keltner channel, which is a different thing, price action, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल. ये सारी चीजें हम देखेंगे विच इज डिफरेंट. 5 मंत्र, तो ऑप्शंस मंत्र है, और साथ ही में जो हमारा मास्टर ऑफ वेव्स है उसे कहेंगे वेव्स सूत्र. सूत्र का मतलब होता क्या है मालूम है? थ्रेड. इट ऑल्सो मीन्स रूल्स. तो वो बहुत ही सही है. एंड जो BMW प्रोग्राम है, वी आर गोइंग टू कॉल दैट एज त्रिशूल, बिकॉज इट इज इट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन, एंड इट कंटेन्स 3 important aspects, which is Elliott wave, which contains Neo wave, and which contains options mantra. So that is options mantra is also known as Om. Yeah, that's the entire aim. That is the entire focus. So all of those things are there. But चलते हैं दोस्तों आगे. फिलहाल मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा. मैं तो खाली आपसे पूछ रहा था कि क्या ये नामकरण सही हुआ है कि नहीं. Dr. Shahu Sen is saying Dronacharya teaching us how to fire Brahmastra. Exactly, because that's how it is. So I'm taking a very quick poll right now. ये पोल में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लग रहा है यार आने वाले वीक में, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ निफ्टी इन द कमिंग वीक. इन द कमिंग वीक आर यू एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अप और कम डाउन? मजा आ रहा है. आई कैन सी लॉट ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट. तो यहां पर मैं पोल ले रहा हूं, एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, यू कैन ज्वाइन विथ मी ऑन दी पोल हियर. यहां पर जूम पे है पोल, so do join me on the Zoom platform because यहाँ से पोल होगा, and do ensure to subscribe and like. And दोस्तों एक और चीज है, हमारा Twitter is already crossed that 50,000 mark, and thanks to all of you for believing into what I tweet as time. And I have no operator. People say, are you an operator? No, boss. I am just a time trader. I have no clue. I just know Kal Chakra. So Master of Cycle is now going to be known as Kal Chakra. Kal Chakra means, Kal means space and time both. Kal is a very phenomenal word, which is space and time combined, जो संस्कृत में कहा जाता है काला. Kala is very, very famous if you understand the meaning of it. So, and Chakra. Chakra means cycle. It keep repeating, repeating, and repeating. So the time cycle that we look at it is also a repeat. Okay, I'm ending the poll. Wow, that's a fantastic, phenomenal poll. Which is I'm going to share across. 78% people are bullish. भाई साहब
संडे को पोल आने वाले, पोल नहीं, संडे को डिक्लेयर होने वाला है कि कौन से स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। आप लोग इतने बुलिश है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। तो चलिए, आई एम स्टॉपिंग दी पोल शेयर एंड देखते हैं क्या होता है यहां से। मैं हूं ना, वैसा नहीं है यार, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लेट मी टॉक अबाउट काल चक्र। Let us understand what is Kal Chakra. Kal means Samay, which means time and space. Chakra means repetition. And because of this Kal Chakra, the repetition continues to happen, which is nothing but time cycle. Now, Kal Chakra involves every single thing which exists. Stock market is nothing but an existence of our thought process. जो हम सोच रहे, हम कर रहे, and it is repeating. Because it is repeating, there is an advantage for people who is following that color. So that people who follows the color will know that around this time area, there is a possibility of market to turn. And that's why we call it as a possible area of reversal. Along with that, we need to combine price action so that we know कि price confirm कर रहा है, समय सही है, काल सही है। तो मतलब काल और price, समय और प्राइस दोनों को क्लब करके हम ठीक से ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज भाव भगवान छे, समय बलवान छे, एंड दोनों को कंबाइन करके आपको ट्रेड निकालना है। यू विल बी एबल टू ट्रेड वेल इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। Let me now go on to the chart and look at certain aspect of wave count. I'm going to go on the chart. I'm going to show you basis of Elliott wave count देखना है आज के दिन में. I don't want to confuse people who are practicing neo wave, and I want to just ensure that if you are not confused, I'll show you an Elliott wave count right now. क्योंकि हम हमेशा neo wave practice करते हैं, so I don't really want you to confuse with the wave count of Elliott wave. नहीं तो चलिए neo पे ही रहते हैं. Elliott के काउंट्स अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जन बोले नहीं Elliott भी देखना है. तो चलिए आपके लिए मैं Elliott भी दिखा देता हूं कि क्या वेव काउंट है. और ये रहा मेरा Elliott वेव काउंट. मैं क्विकली स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना. यहां पर आप देख सकते हैं विच इज अ Elliott wave count of Nifty. Are you able to see this, every one of you? So this is Nifty Elliott wave count, suggesting that we are in wave 3 of 5. और ये होने के पहले कल बताया था एरो. I had a session with Upstocks yesterday, and even with today I'm going to have a session with Upstocks in the evening, 2 hours on Elliott wave, where I have shown this. So Nifty Elliott wave count suggesting that we are in wave 3 of 5, and फिलहाल तो हम 3rd of 5. I'm not saying we are starting the 4th wave, but we are in that phase. So यहाँ से और ऊपर जाना है. 20,521, if I'm not mistaken, is a gain square of 9 level. So basis of this, what are the targets that I am seeing over here? As Nifty is now at lifetime high, I think it will stay at lifetime high. Nifty Elliott wave count is suggesting that we are in wave 3 of 5, and we will stay at lifetime highs for some time before we start seeing any kind of a meaningful correction. This will be true unless and until we are seeing the reversal below the prior day low. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिससे पता चलता है यार ये थर्ड वेव हो सकता है. Are you with me? Are you understanding? So we are looking at this entire movement which is there on Nifty, and basis of this chart, it is how I am seeing it as of now. And very important thing that you are going to also see, this is the channel and it is working super. देखिए ना, ये चैनल के बेसिस पे अगर आप देखेंगे मार्केट को, यहाँ पर जो हाई बना है, from here this is the level from where it reversed. This is the level from where it reversed. This is the level we are right now. I'm not saying it will reverse. It will reverse only and only once I see a faster retracement of the last rising segment, which is this one. So मेरे लिए सबसे important support हो गया ये वाला level 20,015.
basis of the tweet which I did on the chart. आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक पोल लेना चाहूंगा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है और कितना आप रिस्क ले रहे हैं, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल पूछने का कारण ये है, अगर मुझे दिखेगा कि बहुत सारे जन वो वाले रेंज में, तो वैसे एग्जांपल्स मैं ज्यादा लूंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन देन टेक दोज काइंड ऑफ एग्जांपल्स मोर, एंड दैट इज, आप ये ट्वीट पे ये इसमें डाल सकते हैं यहाँ पर पोल में, एंड people who are there, they can check on the poll over here. Okay, and यहाँ पे मैं end कर रहा हूँ, चलिए। I can see many of you are between 0 to 1 and 1 to 5. There are people about 10 plus also. That's very interesting. So I'm going to just share across. No, ये मैंने end कर दिया पोल, चलिए, मेरे को ये समझना था। तो अभी फिलहाल करना क्या है, this is basis of a wave count of Elliott wave count. Now I'm going to go simply look at the weekly trend. Can you tell me that the weekly trend is positive? We are in an uncharted territory. We are in an uncharted territory, and the weekly trend is positive with the low of the candle at 19,800, which means 19,800 becomes a super level of support. The daily trend is positive, and we can clearly see the daily trend, which is around this level, which is positive. The only problem right now, if I introduce an RSI, we are in an overbought zone. But overbought का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर buy नहीं करना है. So my mood and view for the market is, I am going to buy this market and I am going to stay bullish on this market unless and until I see a close below the prior candle low. The momentum that you are seeing, which is built across on the market, is phenomenal. This momentum, I can analyze this momentum by simply looking at one indicator. Can you tell me what is the best momentum indicator? Is KST. That is the brilliant indicator जो हम ऑप्शंस मंत्र में करने वाले हैं, अगर आपने नहीं किया होगा पास्ट में तो KST is one such indicator which is very very powerful indicator, जो आप नीचे देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, and KST indicator is clearly suggesting that the overall trend is on the upside. Okay, that's a very very important phenomenal indicator that you should be looking at and you should be using. यहां पर ये जीरो जब क्रॉस हुआ डेली पे, it's like I'm not taking a signal as a daily, I'm looking KST daily just to understand the momentum of the market. मेरा सिग्नल KST पे आएगा 1 आवर पे और 15 मिनट चार्ट पे। 1 आवर के ऊपर अगर हम देखेंगे, KST was already here and this was at 2 p.m. This is 2 p.m. level. This 2 p.m. level was absolutely confirmed along with 2 p.m. level was absolutely confirmed along with the KST breakout also. So it is very important to understand that Nifty जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूं, Nifty KST level in sync with 2 p.m. time is the lethal combination for trading. So KST level कैसे पता चलता है? The green line is the KST and the red line is known as the signal line. Okay, now this is developed by Martin Pring as a signal. KST as a signal is developed by Martin Pring, and basis of this signal you get to know what is the momentum in the market. But इसे यूज करने का एक तरीका होता है दोस्तों, अगर इसे सही तरीके से आप यूज करोगे तो सही जाएगा, और अगर गलत यूज करोगे तो गलत होता है. So you need to know how to use this momentum indicator. ब्रह्मास्त्र के साथ great power comes in. So that's what I was also teaching the when I started the batch this week on ब्रह्मास्त्र की कैसे सही तरीके से सारी चीजों को देखना है. Now if we look at the 1 hour chart,
नाउ 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं. ओके एंड सो how to use this how to use KST indicator is very important because अगर आपने गलत यूज किया तो आप गलत चीज कर पाओगे. Let me ask the people of the past mentees. Let me see. The hourly KST is bullish. 15 minutes KST shows some kind of a profit booking. What will be your strategy? This is a Q&A for you all. Hourly KST bullish है. Default reading मैं ले रहा हूं KST की. 15 minutes पे थोड़ा सा overbought से relieve हो रहा है. Which means what to do? Buy on dips, fantastic Nitesh. Buy on dips or sell puts, super Sunil. Exactly. So दोनों चीजें. लोग करते क्या है, ये देखे अरे ये तो सेल सिग्नल मिल गया. नहीं दोस्त, this is not a sell signal. See this. This was a relief of the KST. KST came down and we got a classic signal here. But again, as I telling you, you cannot use KST. KST is not MACD. KST is not moving average. KST is pure Kal Chakra. It is a indicator of time. It is a pure indicator of time. जो हम options में एक मंत्र है 16-17 नवंबर दिसंबर को हम करने वाले ऑप्शंस मंत्र में KST इज वन ऑफ द टूल विच वी आर गोइंग टू बी यूजिंग. साथ ही में सुपर ट्रेंड भी हम यूज करेंगे उस टाइम पे. ओके सो यू कैन कंबाइन दिस विथ अलोंग विथ द टेक्निक ऑफ टाइम. सो मेरा टाइम साइकिल था 2 बजे का. ओके नाउ दैट टाइम साइकिल वाज एट 2 PM which was this candle, and another time cycle was 12:15 on Thursday. Anyone followed that 12:15 time cycle on Thursday, which was at this level? This was another opportunity for people, and then the KST confirmed as well. So KST अगर आप use कर रहे हो, you have to understand options plus time. And then एक और टाइम मैंने दिया था 3:01 का, एंड 3:01 को आया वो स्पाइक जो हम देख रहे हैं यहां पर. 70 पॉइंट्स का स्पाइक 301 को आया. सो दीज आर द टाइम बेसिस ऑफ विच यू कैन ट्रेड. नाउ लेट मी गो फ्रॉम दिस टूल टू द अनदर वन विच इज नियोवेव. अल्टीमेटली तो हमें नियोवेव यूज करना है. तो नियोवेव के ऊपर क्या लग रहा है चलिए देखते हैं. आई एम गोइंग टू सिंपली चेंज माई चार्ट back to wave theory and I'm going to look at neo wave chart and I'm going to remove this. I don't want to really use this one यहाँ पर. और ये आ गया हमारा wave theory का chart. This is wave F and we are right now in the wave G. This wave G, this was wave D which got completed around this area, and we are right now in wave G which is going on and exactly around 2250 के आसपास इक्वालिटी विथ A हो चुका है. वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव काउंट्स टू दिस इज यहां पर एक ऑल्टरनेटिव काउंट ये है कि ABCDEF is done. There is a possibility we might have done the wave G here and this was just a next wave and we are again started another lag, which means the extension is happening basis of the wave theory. This is an extension of the wave theory. That is what we are seeing, which means trend is exceptionally strong. On the upside, the target that you can see is on the basis of Gann level. Then I'll go to the Gann level. So I'm just showing you the application of all of those things right now. And यहाँ पर मैं एक चार्ट ओपन कर देता हूं जिसे हम कह रहे हैं कहाँ गया मेरा Gann levels. So if I go to the Gann levels and we will look at the classic price action areas now. The low formed, we are looking at Gann now. Okay, we are looking at Gann. So Nifty Gann levels to decide the target for future, and we have now surpassed which level, which was the Gann level 19952 decisively. The next target that opens as per Gann
इज ओके, कौन सा है बोलिए? नेक्स्ट टारगेट दैट ओपन एज पर गैन 20,521. That's the next target which opens as per the gap. Absolutely. तो फिलहाल हम इधर है, यहां से रुझान क्या हो सकता है? रुझान तो पॉजिटिव है। मैं यहां पर अगर डिप मिला, मेरा तो ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, अगर डिप मिला तो फिर से बाय करूंगा। ओके, सो यहां पर अगर आ गया तो और भी अच्छा है, देन वी विल हैव अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन। सो कमिंग वीक के लिए पाथ क्या हो सकता है? शायद हम ऊपर जाए, get the dip, and then we will head there. So this is what I think is the possibility for the coming week, how Nifty can possibly behave for the coming week. Are you with me, every one of you? क्या टारगेट है हमारा? निफ्टी लाइफ टाइम हाइस पे है, तो किस तरीके से हम टारगेट देख रहे हैं? एंड पीपल ऑन यूट्यूब, डू इंश्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट इट, सो दैट आप चैट पे डाल पाओगे, आप चैट कर पाओगे ओनली इफ यू आर सब्सक्राइब। And also do ensure to like and put your comments so that I know what all things you want to learn from the Friday at 4 webinar. So in a nutshell, if I have to just tell you very simply, the overall trend for the market is bullish. Many people who are trying to catch a top here will burn their fingers. Just enjoy the ride as long as it continues. The momentum is extremely strong. Participation is broad based. You can see mid cap, small cap indices are moving higher. Stocks are going like crazy. And Bank Nifty is just reversed up. There are many stocks that have formed a classic bottoming pattern and breaking out on the upside. So you need to ensure when we see a nervous sign, the first sign of nervousness happens once we see faster retracement of last rising segment. वो एक concept है neo wave का. That has not happened. We start seeing divergence on momentum. वो तो जाने दो, ये तो strong momentum पे है, divergence तो बना ही नहीं। We will start seeing rise in volatility. 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, इस तरीके से मार्केट मूव होने लगता है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, वो भी नहीं है। We are simply going gap up, sustain, sideways, gap up, sustain, rally. We are not seeing any kind of a nervousness. और लाइफ टाइम हाई पे जाने के बाद में देर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, यार ये और कितना बढ़ेगा, ये 18,838 गेन से निकल गया, और कितना जाएगा, जाने दो ना। वाई यू वांट टू फाइट द ट्रेंड? नेवर फाइट द ट्रेंड। इफ यू फाइट द ट्रेंड you will not make money. Similar to this, if you are an options trader, you need to keep a watch on one classic indicator which is known as super trend, because super trend is one of the simplest way in which you can trail your options position buy side pay. And if you are an option seller, there is that indicator is like a ramban जिसे हम कहते हैं, that indicator you can't really afford to miss. So super trend is one. Keep a watch on volume profile. When I say volume profile, options data से पता चलता है कि कहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल बन रहा है, कहां पर लोगों ने अपनी पोजीशंस वापस से ऑफलोड करनी शुरू हुई है। इफ यू चेक टुडेज वॉल्यूम प्रोफाइल एंड यस्टरडेज वॉल्यूम प्रोफाइल, देयर इज एब्सोल्युटली नो सिग्नल कि यहां पोजीशंस ऑफलोड हो रही है। ठीक है, वहां से हिंट मिलती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऑफलोड करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो कोई भी हिंट ऐसी नहीं है जिससे देख के पता चल रहा है कि पोजीशंस आर गेटिंग ऑफलोडेड। देयर इज नथिंग ऑन द पोजीशंस ऑफ ऑफलोडिंग. So that has not happened, which means the sign is still bullish. The next important thing that you need to keep a watch on is open interest analysis. So अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, are you able to see this chart? This is open interest profile. यहां से पता चलता है कि कहां पर मार्केट में ओवरऑल पोजीशंस बड़े प्लेयर्स ने क्रिएट किए इन ऑप्शंस. इफ आई चेक दिस 20,000 पे तो बहुत ह्यूज बिल्डअप है. If you're looking at 20,000, we have approximately 1.5 CR short on the put side, which is huge compared to 60 lakh on the call side, which is reducing. ठीक है, OI change में 27 lakh buildup already यहाँ पर है. उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, बहुत ही interesting put side पे we can see, this is just a second, this is what we saw as the level. Now, if I come to another level, okay, which is at this,
we can see 1 CR का put shot already 20,200 पे है against 56 lakh का call shot, which is twice now. Also, the open interest change is 78 lakh. Change in open interest is equally important that you are able to see on the chart here. So it's very important to analyze this open interest profile to understand the big players activity. Unless you understand the big players activity, we will not be able to do things correctly. So big players activity की जरूरत है. So 5 मंत्र जो ऑप्शन ट्रेडर्स को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन से 5 मंत्र है? पहला मंत्र, अंडरस्टैंडिंग द KST. क्या मोमेंटम है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सबसे ज्यादा जरूरी है. दूसरा मंत्र, अंडरस्टैंडिंग बाय लुकिंग एट प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन मतलब कहां पर हर्डल है, कहां सपोर्ट है, क्या लग रहा है. प्राइस एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तीसरा मंत्र is looking at the entire structure along with the super trend analysis, जिससे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाओ. प्राइस एक्शन से टारगेट मिला, सपोर्ट मिला, सुपर ट्रेंड से स्टॉप लॉस मिला, सिग्नल भी मिला. दैट इज द थर्ड मंत्र दैट यू शुड नो. चौथा मंत्र, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक सिस्टम है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम. इट इज नॉट the way you think moving average should be used. That system actually uses something very phenomenal, which is about the moving average crossover before option buying, जो आपको 15 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करना है. That is what you have to see. The fifth mantra that you should know is the moment significant enough. प्राइस एक्शन पे जो आप देख रहे हो, क्या ये मूवमेंट सिग्निफिकेंट है, which is looked at by Keltner channel. So that is the mantra. 5 mantra. और ये open interest profile, volume profile of course are crucial along with that, but the basic 5 mantras that you should see, which forms a strong fist also, are these 5 mantras that you should know when you are trading options. And that is the mantra for us for the upcoming options mantra program, which is happening on 16th 17th December. Are you all in for that? Learning these 5 top mantras of options and trying to trade the market with me on these concepts. So ये 5 मंत्र बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों. एंड इसके लिए मैं एक बहुत ही क्विकली पोल लूंगा आप लोगों के साथ में, just to understand if you are interested to learn these 5 mantras of option trading. And that is what I'm going to do and take a very quick poll. यहाँ पर हमने नाम चेंज नहीं किया है पोल में. जो हम करेंगे which is option trading using technical analysis को options mantra कहा जाएगा, and I'm going to be sharing it across. So Brahmastra is mentorship, options mantra is option trading using technical analysis, wave sutra is what master of waves is all about, and combined together we call it as Trishul or BMW, become market wizard. That is what we are saying. Link is going to be shared by my colleague for this BMW offer. If you want to be enrolling under this offer of BMW, you can do that. And दोस्तों just very quickly यहाँ पर link share कर दिए, and they will share across it on the YouTube also right now, and you can simply be a part of it. So along with equity, your call on gold was so bang on. Can you please look at the medium term trend of gold? Hardik, gold is amazing and it's following a classic time cycle. कल 11 बजे एक वेबिनार करते हैं जहां पे मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा. जुड़ने की कोशिश करना. I'm going to talk about gold, I'll talk about crude oil, and I'm going to do that very quickly. Mid cap, small cap stocks, तो यार those are icing on cake. So I will be bullish on those stocks also very clearly. And it's fantastic. So guys, are you all ready to be with me tomorrow at 11 a.m. is what I'm asking you all. क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कल सुबह 11 बजे वेबिनार के लिए, एक्सक्लूसिव आई ओपनिंग मास्टर क्लास के लिए? If yes, you have to register on the link, and if we go houseful, you will not be able to enter, because जिस हिसाब से रुझान है हम फुल जाते every week, single week, and I will be giving you again the sutra of Kal Chakra
काल सूत्र जो मैं बताऊंगा, link has to be shared across Zoom link नहीं, please share across the webinar page link. How will they register on the Zoom when we have not started yet? You have to give the webinar link. Please don't do that blunders. And that is how I'm going to do that. I'm telling my colleague, उन्होंने wrong link share की, you don't use that link. Let me share across the right link. Just give me a second. I'll type and share it across with all of you. Just a moment. And यहाँ पर है आपका link, which is going to be with you, and you can register. I can see so many of you have already registered with me. So ये रही link आपकी. Do use this link and register for tomorrow's webinar. So जाते जाते दोस्तों, अभी क्या मैं आपको बता रहा हूँ. We are launching this BMW program under a new umbrella of Trishul, which is going to comprise of Master of Waves, which is now known as Wave Sutra, which is going to comprise of Options program, which is known as Options Mantra, and ये दोनों को क्लब करके हम कहते हैं साथ ही में Become Market Wizard और Trishul. और अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो साथ में जो हमारा ब्रह्मास्त्र mentorship has already started. If you are looking at that, that's going to be simply superb. Investing में कर सकते 5,000 से अगर आपको शुरू करना है ट्रेड लेना, so you can look at powerful trade setup and those things also. You can trade. You're looking at that. So I'm open for questions, guys, and any questions, any doubts that you might have. Okay, I can see so many of you have already registered for this program. It's fantastic and glad to get you all on board. So दोस्तों, आने वाले वीक के लिए क्या है, हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, आने वाले वीक के लिए जो ओवरऑल ट्रेंड है हमारा, that is bullish. Dips should be used as buying opportunity. For me, the target is 20,521. On the downside, the support is 20,020. Unless we close below that 20,020, I am not going to sell the market. Okay, that is the mantra for today, and I'm going to be talking about this decisively. Yes, the private Telegram group for Brahmastra is already kicking. We are already discussing a lot of things there, and that is fantastic. And for people, many of you who are asking me about how to register for this options trading program, which is known as Options Mantra, तो मैं वो पेज ओपन कर देता हूँ. I think link is shared only once. I'll just again open up the link so that it is with you all. And यहाँ पर मैं quickly मेरी screen share कर रहा हूँ. You can register yourself for this Options Mantra, and it is going to be simply amazing. This is the link, and you can go and register for Options Mantra. यहाँ पर आप कर सकते हैं, and this is Waves Sutra and those program that you can see here. So यहाँ से आप लिंक पे रजिस्टर कर पाएंगे. I'll just share that link very quickly with you all. And ये रहा यहाँ पर लिंक जहाँ आप शेयर कर सकते हैं. I'm not sure why are we sharing a link of Telegram. I'm not sure what are you sharing across, नेहा. जाने दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों. तो चलिए कल मिलेंगे वापस से क्विकली 11 बजे. आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. Do register for these mantras if you want to learn about options or if you want to learn about wave theory. Do be a part of this. Brahmastra shuru ho chuka hai, and that is Brahmastra means the super astra, right? That is what Brahmastra is all about. Thank you very much, guys. Do follow me on the Twitter. People watching this on YouTube, do ensure that you are aware about the comments that you have to put in so that I know you are loving it and I'm enjoying talking to you all. So मिलते हैं कल 11 बजे, and have a wonderful time. Become a wonderful trader. कल डिराइव करेंगे टाइम साइकिल साथ में आने वाले वीक के लिए. Thank you and God bless. Have a wonderful time. Become a wonderful trader.